and let me share the screen. So I share my screen. ओके तो ये है कि हमने बात की थी लाइंस ऑफ कर्वेचर की. मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी. लाइंस ऑफ कर्वेचर वो कर्व्स हैं जो जिनके टेंजेंट्स हर पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में हैं, दैट आर द प्रिंसिपल डायरेक्शन. अब मैंने कहा था सरफेस कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो जब भी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो वो सरफेस का छोटा सा हिस्सा है. तो शायद तुम्हें ये गलतफहमी हो कि ये जो सरफेस पैच ये लग रहा है ये स्फीयर का हिस्सा है. ऐसा होता नहीं है ना. इट कुड हैव बीन, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा रहे हैं और देख रहे हैं. वो टुकड़ा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. लेकिन जब मैं लाइन ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो दीज आर कर्व्स ऑन द होल ऑफ द सरफेस, राइट. लेकिन जब हम इसको फोकस करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे अच्छा यहाँ पे हमने फोकस किया छोटा सा, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्शंस है ना. तो फिर हम देखेंगे अच्छा ये प्रिंसिपल डायरेक्शन में ही इसका टेंजेंट भी है. तो हर पॉइंट पे अगर इस कर्व के ऐसे ही होता है तो हम ये इस कर्व को कहते हैं इट्स द लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस. तो इसका मतलब है क्योंकि its the tangents are same, therefore dy by dx's are same, so therefore they must satisfy the same differential equation. और दूसरा हमें ये भी पता है क्योंकि जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस है वो हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल होती है, तो ये जो लाइंस ऑफ कर्वेचर होंगी तो वो भी हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल होंगी. so they would form you have a set of curves and then you have orthogonal trajectories. अगर तुम इनको देखो तो इससे ये भी हमें मिला कि ये जो अगर मैं उनकी डायरेक्शंस लूं से, अगर मैं उनको पैरामीट्रिक कर्व्स लूं और उनकी डायरेक्शंस को मैं आर यू आर पी मानूं तो पहली कंडीशन तो ये होगी अंडर दो दैट पैरामीटराइजेशन दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो एवर, राइट. क्योंकि वो लीनियरली क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट है. क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है. इसको क्या होगा. ओके सो नाउ व्हाट वी डू, तो इसलिए हम उनको देखेंगे कि अगर हम उनको लें अंडर व्हाट कंडीशन हम उनको पैरामीट्रिक कर्व्स ले सकते हैं. सो लाइंस ऑफ कर्वेचर एज पैरामीट्रिक कर्व्स. पैरामीट्रिक कर्व्स है ऐसी कर्व्स जो हमें पैरामीटराइजेशन से मिलती है. अगर हम एक पैरामीटर को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और दूसरे को रन करेंगे सो आई गेट अ कर्व ऑन अ सरफेस. वो कर्व की डेफिनेशन से ही मिलती है, उसकी पैरामीटराइजेशन से ही मिलती है. सो थ्योरम हम लिखेंगे जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. थ्योरम कि f is equal to 0 and m is equal to 0 is the necessary and sufficient condition, is the necessary and sufficient condition, which is equivalent to under what conditions for the lines of curvature to be the parametric curves. Okay, so let the equation of the surface be as usual r is equal to r at uv. Now the differential equation for the lines of curvature क्या है? The differential equation of the lines of curvature जो कि हमने किया था, it is em minus fl du square plus en minus gl du dv plus fn minus gm dv square is equal to 0. Let's call this form. Now, if the lines of curvature are taken to be
taken as parametric curves, then पहली बात तो ये कि f must be equal to 0 क्योंकि वो orthogonal है, because since the principal directions are orthogonal. क्योंकि पहले हम प्रूव कर चुके थे कि प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर ऑर्थोगोनल, देयरफॉर क्योंकि जो लाइंस ऑफ कर्वेचर है वो उन्हीं की डायरेक्शंस को फॉलो करती है, प्रिंसिपल डायरेक्शंस के ही उनके अलोंग टेंजेंट्स होते हैं, सो दे मस्ट बी ऑर्थोगोनल। तो अगर मैं उनको पैरामीट्रिक कर्व्स मानूंगा तो उसका मतलब क्या है, पैरामीट्रिक कर्व्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल। अगर मैं उनको पैरामीट्रिक कर्व्स मानूंगा तो देन आर यू डॉट आर वी, पैरामीट्रिक कर्व्स की डायरेक्शंस ये होती हैं, तो ऑर्थोगोनल होने का मतलब दिस इज 0 और दिस इज द सेम थिंग एज f। अगर f 0 है तो हमें क्या करना है कि अगर मैं इनको लेता हूँ प्रिंसिपल डायरेक्शंस को पैरामीट्रिक कर्व्स, देन f भी 0 होना चाहिए और m भी 0 होना चाहिए, और कन्वर्सली अगर f एंड m 0 है देन दे मस्ट बी lines of curvature must be parametric curves। तो अब मुझे दिखाना है m भी 0 होना चाहिए, वो हम कैसे दिखाएंगे? ओके, therefore अगर आप इसमें f 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, f को अगर हम 0 कर दें या फिर f को 0, f अगर 0 करेंगे तो ये और ये जाएगा। एक और चीज हम कर सकते हैं ऑल्सो, चलो एक ऐसा करते हैं ऑल्सो, u is equal to constant and v is equal to constant are the equations of parametric curves। और इनकी डिफरेंशियल कर्व इक्वेशन क्या होनी चाहिए, and therefore their combined differential equation होनी चाहिए is क्या होनी चाहिए, should be du dv equal to 0, क्योंकि अगर u कांस्टेंट है या v दोनों में से अगर एक भी कांस्टेंट है तो ये उनका जो चेंज है वो 0 होगा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब इन दोनों का कंबाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो दिस मस्ट बी 0, क्योंकि मतलब कांस्टेंट का मतलब जो चेंज है du या dv दोनों में से एक 0 है, व्हिच मींस उनका प्रोडक्ट 0 है। अब अगर ये कंबाइंड इक्वेशन है ऑफ लाइंस ऑफ कर्वेचर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व्स। सो अगर पैरामीट्रिक कर्व्स लाइंस ऑफ कर्वेचर है then 2 and 1 must be essentially same up to a constant, up to a multiplication by a constant, because right hand side is 0. So in order that lines of curvature are parametric curves, 1 and 2 should be equivalent। Equivalent होने का मतलब मैंने बोला they should be the same apart from multiplication by a non-zero constant, which means that अगर मैं इनके coefficients देखूं, coefficients देखने का मतलब इसका मतलब ये कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, ये कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए और ये कोएफिशिएंट सम नंबर होना चाहिए, मतलब या 0 या कोई नॉन जीरो नंबर। ओके, सो दैट मींस एक आज पहुंच गए हम। हाँ, इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है em पहला मुझे मिलेगा माइनस fl must be equal to 0, क्योंकि दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ du स्क्वायर, और यहाँ du स्क्वायर है ही नहीं, मतलब इट इज एक्चुअली 0 into du स्क्वायर plus 0 into dv square. Comparing, so this should be 0, which means that e into m is equal to 0, since f to 0 है ही। अब अगर which means m must be 0,
Because why? Because E cannot be 0. Why? Because E is what? E is basically the length of RU. और ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि RU जो है इसका स्क्वायर है E. तो उसका मतलब RU 0 वेक्टर होगा, which means पॉइंट रेगुलर नहीं होगा. तो रेगुलरिटी क्योंकि हम assume कर रहे हैं, so M must be 0. So therefore EN जो हमें चाहिए था F and M should be 0. We are done. Now conversely, suppose that F is equal to 0 and M is equal to 0. Then the equation 1, मतलब ये तो ज़्यादा easy है. Then the equation 1 of lines of curvature becomes En minus GL into du dv is equal to 0, right? Which would imply du dv must be equal to 0, which is the differential equation of the parametric curves. यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जब मैंने कहा ये 0 होना चाहिए तो उसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि En minus GL should not be equal to 0, क्योंकि अगर En minus GL is equal to 0, it would imply that E by L should be equal to G by N. और दूसरा उस पर हमने किया है F is equal to 0, M is equal to 0, right? तो हमें क्या मिलेगा? अगर ये 0 हुआ तो we have an oblique point, और वहां पे तो हर कोई डायरेक्शन जो है वो प्रिंसिपल डायरेक्शन है, तो वहां पे तो कोई भी ले लो, तो वहां पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है फॉर लाइंस ऑफ कर्वेचर. तुम चाहे तो पैरामीट्रिक कर्व्स को ही ले, ठीक है ना? तो वहां पे तो हमें जरूरत ही नहीं है. इन केस दिस इज ट्रू देन वो तो है ही F और M की वजह से 0 होने के मतलब you would get this E by L is equal to this is equal to F by M, which is basically indeterminate because F भी 0 है, M भी 0 है. तो आइडिया ये है, फिर तुम इनका वैल्यू कुछ भी ले सकते हो दूसरे कोएफिशिएंट्स का, which is the same thing, the point is oblique, ठीक है ना? तो जब पॉइंट oblique है तो every direction at a point is a principal direction, so there is no issue of whether they are parametric curves or not, क्योंकि तुम parametric curves जो होंगी वो भी automatically principal direction में ही lie करेंगी. Anyways, so that's one thing हमने जो settle किया. अब एक और theorem है what we call Euler's theorem जो हम करेंगे. Euler's theorem actually relates the curvature of a normal section with the curvatures of principal sections. यानी मेरे कहने का मतलब है normal curvature Kn in any direction at a point on a surface at any point on a surface can be expressed as Kn is equal to K sub A cos square psi plus K sub B sin square psi, where जैसा कि हमें पता है K sub A and K sub B are principal curvatures and of course now अब जो sin है psi is the angle between you angle which the direction जो हम वहाँ देख रहे हैं जहाँ पे जिस डायरेक्शन में हम नॉर्मल कर्वेचर ढूंढ रहे हैं, with the direction let me call it du dv, उस डायरेक्शन को हम du dv से रिप्रेजेंट करते हैं, of normal section makes with the parametric curve. Normal section
makes with the principal direction dv is equal to 0. यहाँ पे मैंने assume किया है कि lines of curvatures को मैंने lines of curvatures here are my parametric curves, और मैंने मतलब तभी मैं कह सकता हूँ ये principal direction है. तो अगर lines of curvatures are parametric curves, then principal directions are precisely du equal to 0 and dv equal to 0. So अगर इस वाली principal direction से because this represents v equal to constant, तो v equal to constant का मतलब that represents a parametric curve on the surface, जिसको हम usually ऐसे draw करते हैं. अब हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में कोई नॉर्मल सेक्शन है, यानी वो वाली कर्व, और वो नॉर्मल सेक्शन इस एक पैरामीट्रिक कर्व के साथ एंगल बनाती है साई, और यहाँ पर जो दूसरी स्पेशल नॉर्मल सेक्शंस हैं जिनका कर्वेचर कुछ है के ए एंड के बी, तो अगर v इक्वल टू कांस्टेंट जो मेरी पैरामीट्रिक कर्व है उसके साथ इसका एंगल जो है वो साई है, then kn जो curvature of the normal section will be जो है k sub a cos square psi, where psi is the angle that this normal section makes with the parametric. normal section होता है कि एक curve होती है, वो what is v equal to constant, it's a curve. तो इन दो curves के दरमियान अगर एंगल psi है, then we should have kn is equal to ka cos square psi and plus kb sin square psi. Let's do the proof. Now let the equation of the surface, जैसा कि हम लिखते हैं, of the surface B R is equal to R at UV. Now since the lines of curvature are taken, if we take the lines of curvature as the parametric curves, तो पिछला theorem ये कहता है curves we must have f equal to 0 and m equal to 0. And the normal curvature जो कि हमने किया था define या curvature of the normal section, kn is equal to L du square plus twice m du dv plus n dv square divided by e du square plus twice f du dv plus g dv square. अब चूंकि f और m 0 है, this should be just L du square plus n dv square divided by e du square plus g dv square. So let's call this one. Okay. Now the principal section. So let Ka be the normal curvature for the principal section. वैसे कोई KB भी हम लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो हो सकते हैं, मतलब हमारे दो for the direction PV equal to 0. कि सब एक को मानता, अगर मैं KB भी लेता तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, तो दोनों में से एक, मतलब because DV represents a principal direction, because my parametric curves are my lines of curvature. So अगर DV के साथ ये इसका है, then in that case by the same formula KA must be, अब जो अगर मैं इसमें ये डालूं
Kn is the particular values of k, that's the maximum and minimum values of these kn's are k sub a and k sub b. अब अगर एक डायरेक्शन जो मेरी है, मतलब in case dv is equal to 0, this should be simply L by E. तो वही मैं लिखूंगा k sub a should be equal to L by E. अगर k a की जो डायरेक्शन है वो है dv is equal to 0. And similarly, the principle मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है. Similarly, the principal curvature KB being the normal curvature, in the direction du is equal to 0. So I should have KB is equal to, in that case, L by n by g, क्योंकि du 0 है, वो dv square cancel हो जाएगा. Now अब हम थोड़ा सा kn के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे. Now I have got a situation, अगर मैं locally देखूं, I have got a curve u, curve v, यानी ये मेरी principal directions हैं. Let this be u equal to constant. This direction is represented by u is equal to constant, or I can say du is equal to 0, right? And then I also have, right, v is equal to constant, another parametric way. मैं इसको focus कर रहा हूँ उस point पे जहाँ पे हो रहा है, यानी dv is equal to 0. ये एक और curve है. Of course, then I also have what we call the principal normal section जो है, जिसका curvature k है, और जिसको मैंने कहा this is the direction dv. मैं कह रहा हूँ इन, मतलब मैंने क्या लिया था, dv equal to 0. हाँ, dv equal to 0 का इस डायरेक्शन के साथ एंगल साई है, यानी इस टेंजेंट के साथ जो यहाँ पे है उसके साथ इसका एंगल साई है, इस डायरेक्शन का, मतलब ये एंगल साई है, राइट. दो कर्व्स के दरमियान एंगल का मतलब होता है उनके टेंजेंट्स के दरमियान वो एंगल होना, राइट. सो अगर मैं अब इसको देखूं, you have to remember, ये एंगल है, मैं ठीक से मैंने बनाया नहीं शायद, ये एंगल है ना, I wish I could write, ये एंगल एक्चुअली तो I should have written it, क्योंकि मेरी जो ये प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं वो ऑर्थोगोनल है, यानी ये और इसको प्रॉपर्ली बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो लाइंस ऑफ कर्वेचर है, they are the lines of curvatures. नहीं, ये पैरामीट्रिक कर्व जो है वो लाइंस ऑफ कर्वेचर्स हैं, ये दे आर ऑर्थोगोनल. तो अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे रहेगा. आई होप मैंने वो ऑर्थोगोनल दिखा दिया. चलो ठीक है, तो ये है मेरी डायरेक्शन du dv, इसके साथ इसका एंगल साई है, ये है मेरा dv इक्वल टू 0, ये मेरा du इक्वल टू 0, दिस इज du इक्वल टू 0. तो ये एंगल साई है और ये है मेरी डायरेक्शन 1, du equal to 0, यानी मतलब इसी को मैंने थोड़ा सा अलग से बनाया. Anyways, so now a normal section of a surface. Now the normal section of the surface in the direction du dv, du dv makes an angle psi with the principal direction dv equal to 0. So cos of psi होना चाहिए बराबर, using the जो हमने फॉर्मूला बनाया था, ये हमने डिराइव किया था, एंगल बिटवीन एनी डायरेक्शन एंड द प्रिंसिपल डायरेक्शन dv इक्वल टू 0, वो बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1/√e into e into du by ds. ये हमने इवैल्यूएट किया था एक जगह, f into dv by ds. तुम चाहे तो उसके साथ उसको मैच करो.
राइट, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि f 0 है, so it is just root e into du by ds, क्योंकि in our case f is equal to 0 and sin of psi बराबर होगा उसी हिसाब से, उसी फॉर्मूला में हमने निकाला था, sin of psi is h by root e into dv by ds, which is equal to, now since h square is equal to eg minus f square, it means that f chunki 0 hai, h square is equal to eg, since f is equal to 0, so I can write this as h ko main likh sakta hu root e g by root e dv by ds, which is nothing but root g into dv by ds. Okay, so now from 1 मैंने लिया है कि n जो है वो बराबर है l du square plus n dv square divided by ds square, because ds square is e du square plus g dv square, since f is equal to 0, उस वजह से, और मैं यहाँ twice of du dv भी होता है, so that is just l du by ds का square plus n dv by ds का square. Okay, now that is equal to du by ds is okay, इससे पहले वाला du by ds is basically cos psi by root e, so it means l into cos psi by root e plus n into dv by ds होगा sin psi by root g का स्क्वायर यहाँ साथ में, which is l by e cos square psi plus n by g sin square psi. लेकिन हम ये भी निकाल चुके हैं l by e किसके बराबर है, l by e is ka और n by g is kb, so इसको रेफर करना चाहिए. I think let's call this second and third, so which is equal to k sub a cos square psi plus k sub b sin square psi by second and third. Well, it was just, मुझे लगता है it was simple calculation, so we can just write it down like this. Kn can be written like this. Okay, next corollary इसकी एक बड़ी important है, नहीं मतलब in a way हम इसको ऐसे, इस सेम चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं. If k sub n and k sub n2 denote normal curvatures in any two orthogonal directions, we should always have that kn1 plus kn2 must be equal to k sub a plus k sub b. देखो मैं फिर से अगर सरफेस के उस पैच पे मैं जूम करूं, अब यहाँ पे सरफेस नॉर्मल है और ये है मेरा इसका जो क्या बोलते हैं the plane which contains the surface normal, और ये जो सेक्शन है, ये जो काटता है सरफेस को, वो है अपना नॉर्मल सेक्शन. अब इसी तरह से अगर मैं एक और प्लेन लूं जो अगेन सरफेस नॉर्मल को कंटेन करेगा, तो एक और नॉर्मल सेक्शन मुझे मिलेगा. तो देयर आर इन्फिनिटली मेनी नॉर्मल सेक्शन. अब हम कह रहे हैं मान लो दो नॉर्मल सेक्शंस हैं और वो कोई भी दो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, राइट. उनका जो सम कर्वेचर होगा वो होगा सम ऑफ द
curvature, sum of the least normal curvature का जो section है और plus the curvature of that normal section which is the largest. And you have to remember ये दो हमेशा orthogonal होते हैं. तो अगर कोई भी दो orthogonal directions हो तो उनका भी जो ultimately हमें sum मिलेगा वो वही होगा जो least curvature और highest curvature जो normal sections का है उनका sum है. और ये प्रूव करना बहुत easy है because why? Because now kn1 can be written as ka cos square psi plus kb sin square psi, where the direction of kn1 makes an angle psi with the direction dv equal to 0. ठीक है. अब देखो तुम्हारे पास यूं समझ लो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब, और ये एक डायरेक्शन है यहाँ पे dv जिसके साथ एक बनाता है एंगल साई, तो दूसरे के साथ क्या एंगल बनाएगा π/2 माइनस साई, है ना. देन यहाँ लिख सकते हैं हम बाय ऑयलर्स थ्योरम. The angle between the direction of the normal section with normal curvature इसके साथ है, with normal curvature kn2 is π/2 minus psi, because the directions of the normal sections with the angle between the direction, मैंने क्या लिखा था, angle between the direction of the normal section and of course dv equal to 0, and the direction मतलब ये understood है वैसे, is π/2 minus psi, since the direction of the normal sections with normal, ऐसे लिखता हूँ, with curvatures k sub n1 and kn sub 2 are orthogonal, उनका खुद का एंगल जो है उनके बीच में वो π/2 है. अगर एक किसी डायरेक्शन के साथ एंगल psi बनाता है, दूसरा π/2 minus psi बनाता है. Therefore, by Euler's theorem, I should have kn2 should be equal to k sub a cos square π/2 minus psi plus k sub b sin square π/2 minus psi. Now cos of π/2 minus psi is sin और sin का cos है, तो ये बन जाएगा k और जो स्क्वायर भी है, अगर sin का कुछ इशू होगा, it would be sin square psi plus kb cos square psi. So let's call this second. Let's call this first. By adding first and second, we have k sub n1 plus k sub n2 is equal to k sub a cos square psi plus sin square psi plus k sub b sin square psi plus cos square psi, which is nothing but k sub a plus k sub b. So that's what we want to do. Okay, this is known as Dupin's theorem. ये जो corollary है, इसको हम Dupin's theorem भी कहते हैं. अगर तुम्हें एग्जाम में आए state and prove Dupin's theorem, तो तुम ये corollary करोगे, लेकिन उसके लिए पहले Euler theorem को भी prove करोगे.
ये तो पहले उसी से मिलता है, हमें तो दो लाइंस का प्रूफ है, टू पिंस थ्योरम। ओके, ये हम यहाँ तक पहुंच गए। नाउ नेक्स्ट जो हमें करना है, दैट्स कॉल्ड रॉड्रिग्स फॉर्मूला। ठीक है, द क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास अब मैंने देखा मेरी जो एक स्पेशल लाइंस ऑफ कर्वेचर्स हैं सरफेस पे, स्पेशल कर्व्स है जिनको हमने लाइंस ऑफ कर्वेचर का, और जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, राइट। अब मुझे कोई कहे देखो मेरे पास एक कर्व है ये जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है सपोज, तो क्या मतलब ऑन व्हाट बेसिस कैन आई डिसाइड कि ये लाइन ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास है रॉड्रिग्स फॉर्मूला, which gives us a necessary and sufficient condition for a line of curvature to be a line for a curve to be a line of curvature. When can we say an arbitrary curve on a surface actually is a line of curvature? यानी उसकी डायरेक्शन वही है जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस है। उसके लिए हमारा ये रॉड्रिग्स फॉर्मूला है, Rodrigues formula, which is sort of a theorem basically, वो ये है कि the necessary and sufficient condition or for a curve on a surface to be a line of curvature is that k times this small dr, any small element of the displacement in a direction on a surface, plus this dn is equal to 0, where of course यहाँ पे जो k है, k denotes the normal curvature. Normal curvature का मतलब, तो ओके, नॉर्मल कर्वेचर का मतलब सिंपली है r डैश डबल डैश डॉट है, यानी वो जो कर्व होगी उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर, उसका n, सो दिस इज माय नॉर्मल कर्वेचर। तो k का मतलब यहाँ पे कर्वेचर नहीं है बल्कि नॉर्मल कर्वेचर है इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, सो दिस इज व्हेन कर्व कैन बी said ki it's line of curvature and vice versa. So let's do the proof. Okay, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब लाइन ऑफ कर्वेचर्स क्या है? लाइन ऑफ कर्वेचर्स वो है जो डायरेक्शंस है वो सेम है एज प्रिंसिपल डायरेक्शंस एट ईच पॉइंट। So let a curve be a line of curvature. Then on a surface, R is equal to R at UV. Now the lines of curvature, the unit principal curvature, principal curvatures of the lines of curvature is given by the principal sections, है? So उसका formula जो है वो हमने किया था, it is given by KE minus L times lambda is equal to M minus KF, right? And KF minus M times lambda is equal to N minus KG. मतलब इनका रेशो, इन दोनों का रेशो सेम है, वो लैम्डा है। मतलब ऐसे ही हमने किया था वो, हाँ, लेकिन वहां पे के एन था, लेकिन यहाँ पर भी चूंकि हमने कहा ना ये मुझे लिखना चाहिए, मैंने गलत लिखा, नॉट कर्वेचर ऑफ द
lines of curvature is actually the principal curvature, which is given by these. Normal curvature of the lines of curvature is given by this, which are the principal curvatures, basically. So where lambda, of course, जो हमने lambda को substitute किया था, वो था lambda was du by dv. So that is, इसको अगर मैं simplify करूँ, it means L minus, इसको right hand side पे ले जाते हैं, L minus ke, क्योंकि ये dv by du है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा du plus m minus kf times dv is equal to 0, and m minus kf times du plus n minus kg times dv is equal to 0. यहाँ मुझे लिखना चाहिए k, normal curvature k is given by these two differential equations. Now substituting the value, इसको हम equation 1 कहते हैं. Now इसमें ये जो first and second order fundamental magnitudes हैं, इनको हम लिखेंगे in terms of RU and RV. So what we write here is now substituting the values, थोड़ा लंबा छोड़ा है, of E equal to क्या था अपना RU dot RU, F equal to RU dot RV, G equal to RV dot RV, L equal to minus N sub U dot RU, M equal to minus N sub U dot RV, and N equal to minus N sub V dot R sub V in first. तो हमें मिलेगा ये सब substitute करने के बाद we will get something like this: N sub U dot R sub U plus K times R sub U dot R sub U whole multiplied by D plus N sub V dot R sub U plus K times R sub U dot R sub V, क्योंकि G है, I think F times dV is equal to 0, and similarly N sub U dot R sub V plus K times R sub U dot R sub V du plus N sub V dot R sub V plus K times R sub V dot R sub V into dV is equal to 0, जिसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा रीअरेंज करके. मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम N sub U times N sub U, इसको अलग RU को यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, तो it should be N sub U du plus N sub V dV, क्योंकि इसके साथ भी RU है, इसके साथ भी RU है, तो इसको निकालते हैं बाहर और यहाँ लिखते हैं डॉट RU प्लस इसी तरह से आएगा K sub RU du plus RV dV dot RU is equal to 0, क्योंकि RU सब में यहाँ कॉमन है इसी. अब मैंने इसको अलग अलग किया और दूसरे में से हमें मिलेगा N sub U du plus N sub V dV, तुम आराम से देख सकते हो, dotted with RV plus K RU du plus RV, थोड़ा सा रीअरेंज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. और इसको लिखिए एंड ये दो इक्वेशंस ने, लेकिन दिस इज नथिंग बट dn एंड दिस इज नथिंग बट dr. सो और मैं लिख सकता हूँ dn डॉट ru प्लस k टाइम्स dr dot ru is equal to 0, and
dn dot rv plus k times dr dot rv is equal to 0, और इसको फर्दर इसमें ru को कॉमन आ जाएगा, so you can write it as dn plus kdr dot ru is equal to 0, and dn plus k times dr dot rv is equal to 0. Let's call this equation, इससे पहले कौन सा लिया हमने, जरूरत नहीं ऐसी को कर सकते हैं, चलो सेकंड रखते हैं इसका, पहले वाले को फर्स्ट लिया था हमने. नाउ वंस वी हैव डन दिस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो ये वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू आर यू और आर वी, या फिर ये जीरो है, क्योंकि ये इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता अगर पॉइंट रेगुलर है. तो अब एक ही कंडीशन है, या तो ये वेक्टर आर यू को भी परपेंडिकुलर है, आर वी को भी परपेंडिकुलर है, या फिर ये जीरो है, राइट. लेकिन हमें पता है क्योंकि ये लाइंस ऑफ कर्वेचर है, हमने माना है लाइंस ऑफ कर्वेचर ही हमारी, ये जो कर्व है ये लाइन ऑफ कर्वेचर है और ये उसका नॉर्मल कर्वेचर है लाइन ऑफ कर्वेचर का. तो उसका मतलब ये हुआ ये जो आर यू एंड आर वी है वो आपस में ऑर्थोगोनल है. तो ऑर्थोगोनल है तो दैट मीन्स ये जो ये वेक्टर है, या सीधे हम कर सकते हैं, लेट मी इसको मैं समझा सकता हूँ. नाउ ये जो वेक्टर है dn plus k times dr, this lies in the tangent plane. ऐसे भी कर सकते हैं, tangent plane. Why? देखो dn है क्या, dn is perpendicular to n, right? And dr जो है, dr is a linear combination of, it is ru du plus rv du. और मेरा जो टेंजेंट प्लेन होता है इट इज, इसकी जो बेसिस है वो आर यू है. तो इस टाइप का जो भी वेक्टर होगा सम लीनियर कॉम्बिनेशन, तो डी आर तो यहाँ पे है ही, और ये जो एन है वो परपेंडिकुलर है, और डी एन जो है वो एन को परपेंडिकुलर है, यानी डी एन भी इसी में लाई करेगा, डी आर भी इसी में लाई करेगा. और अगर दो वेक्टर्स एक प्लेन में है तो उनका कोई कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी प्लेन में होगा, तो ये टेंजेंट प्लेन में है. अब सिचुएशन ये है जो मैंने इससे पहले भी हमें आया था कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि एक ही लाइन में नहीं है, और एक तीसरा वेक्टर है जो दोनों को परपेंडिकुलर हो, वो पॉसिबल ही नहीं है अनलेस दे लाई इन द सेम लाइन. एक प्लेन में ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक ही लाइन में नहीं है या लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, और एक ऐसा वेक्टर है उसी प्लेन में जो दोनों को परपेंडिकुलर हो. हाँ उस प्लेन से बाहर तो पॉसिबल है लेकिन उस प्लेन में पॉसिबल नहीं है. सो देयरफॉर dn plus kdr cannot be perpendicular to both r sub u and r sub v. So therefore by third ये चॉइस बचता है कि dn plus kdr must be equal to 0 vector. So ये एक साइड प्रूव हो गया. Now conversely suppose that this is true, dn plus kdr is equal to 0 holds for some curve, right? For some k. For some function k, let me call it. हमें नहीं पता k क्या है, हम दिखाएंगे k एक तो नॉर्मल कर्वेचर होगा, और हाँ उतना ही तो दिखाना है. Then we have to show that k is the normal curvature and it is the normal curvature of the line of curvature. So वो हमें दिखाना है. Then reversing the above steps हम पहुंच जाएंगे. Then reversing the above steps, तो हम वापस उस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे कि L minus KE times DU plus M minus KF times DV is equal to 0.
and m minus kf du plus n minus kg times dv is equal to 0. Thus this curve must be a line of curvature अगर ये 0 है, ठीक है? Thus this curve, thus the curve is a line of curvature if k is the normal curvature of the curve. Okay, now हम दिखाएंगे अगर k is given by this, then it must be the normal curvature. Now given that we have k dr plus dn equal to a 0 vector, it means that k dr मैं लिख सकता हूँ r sub u du plus r sub v dv must be equal to minus n sub u du plus n sub v dv. Now taking dot product of both sides with the vector ru du plus rv dv, we get ru du plus rv dv dotted with r sub u du plus r sub v dv is equal to minus n sub u du plus n sub v dv dotted with r sub u du plus r sub v dv. इनको कर लो using the fact that ru dot ru is equal to e, ru dot ru is equal to f. This is nothing but हमें मिलेगा, actually this is e du square plus twice f du dv plus g dv square is equal to, now using the fact that minus n sub dot ru, this is equal to l, and minus nv dot ru is equal to n. Now वो dot product में हमें मिलेगा, this is actually nothing but l du square plus twice m du dv plus n dv square. That is k जो है वो बराबर है l du square plus m du dv plus n dv square divided by e du square plus twice f du dv plus g dv square. और तुम्हें पता है this is nothing but r double dash dot n, right? Where r is the equation of the curve, where यहाँ जगह ही नहीं है, चलो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखना तुम r is equal to rs is the equation of the curve. तो इसका मतलब क्या होगा? Therefore k is the normal curvature of the curvature. Hence the direction at each point of the given curve is the principal direction. Is the principal direction, and we are done. K being normal curvature, and hence the curve is a line of curvature. Hence the curve is a line of curvature. Okay, so let us stop here. आज हमने काफी किया. क्या anybody